Hello everyone. Can you see this board? Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Okay. Morning, sir. Anything Good to morning, ask from sir. Good morning, sir. morning? So in the last class, we were discussing the focal length of pair of lenses, pair of lens. Before we come to that problem, let me discuss some more properties of single thin lens. So for single thin lens, you already know that the position of image can be obtained by this simple formula, right? The equivalent of this problem, the equivalent of this formula is another formula. So this is optic axis. Let us assume that we placed a lens here. So it's a thin lens. Okay. And a light ray is coming from infinity and it is parallel to axis. Where will this light go if it is a convex lens? This light At will focus. yes, it will pass through second focal point. So this is the trajectory of light. It will go like this. How much light bend in this process? So if there is no lens, then light will go in the same path like here. But because of the lens, light bend by some amount and pass through the second focal point. So light bent this much, right? This is the angle of deviation. If this height is h, light strike at a height h from the optical axis, then what is angle of deviation? Delta is equal to, actually tan delta is equal to Tan inverse h by focal length. F. h upon f2, right? And if h is small, I mean if light is close to the optical axis, tan delta is also small, so tan delta and delta have nearly same Equal to value, delta. which is this. This is for the light which is coming from infinity. Is it true for all the lights? Let us say some light is not parallel to optic axis. What about this case? This is the optic axis. Lens is there. Lens is here. Okay. And let us say some general light ray coming from this point. So light start from here, strike the. If there is no lens, light will keep on going on like this. But because of the lens, it make image here. So what is the angle of deviation here? Angle of deviation is this much, right? So if I put some object here, I will get image here, right? So if this is U, then this is B. What is delta here? Can we calculate delta here also? From Yes, the sir. geometry, this delta is equal to delta 1 plus delta 2, right?
And if this height is h, then tan delta 1 is H by U. h by u absolute value. Tan delta 2 is h upon b absolute value, means positive number. Okay. And if h is small, I can say this is nearly equal to delta. This is near delta 1. This is nearly equal to delta 2. Or what is overall angle of deviation? Delta is equal to delta 1 plus delta 2, which is H h upon upon U1 plus. Can we simplify the bracket? We have this formula for length, right? So in this figure, u has some negative value, b has some positive value, f is also positive, right? And f is actually f2. F2 is also positive because here we are using convex lens. So I can write this number is actually positive. U is actually a negative number, so I can write it like minus u, right, is equal to 1 upon f2, or 1 upon absolute value of b plus 1 upon absolute value of u is equal to 1 upon f2 absolute, right? So what do you see? This number is again equal to so it does this angle of deviation is always same. It does not matter which direction from which direction light incident on the lens. इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है. For same height, angle of deviation is also always same. When light parallel थी तब भी h upon f था. Light parallel नहीं है तब भी h upon f है. And actually this formula is not new. ये इसी formula का angle version है. So when we say 1 upon v, that is proportional to the angle of deviation for image. Image के लिए light कितना deviate हुई. When we say 1 upon u, this is actually the delta 1. Light कितने एंगल से लेंस पे इंसिडेंट हो रही है. So these two formula are roughly equivalent. 1 upon v minus 1 upon e is equal to f, or this. They have almost same meaning. Okay. Now let us see what happens in when there are two convex lenses separated by some distance. सर फॉर्मूला सर सेम ही रहेगा ना सर इसमें दोनों में? For pair of lenses. नहीं सर, इसमें सर जो फॉर्मूला आया सर दोनों केसेस में सर वो सेम ही आया सर डेविएशन का, h upon f2 और h upon f2. Right. So कोई फर्क नहीं पड़ेगा कहाँ से भी हमारी रे आ रही है? No, it just depends on at what height does light incident. सिर्फ ये मायने रखता है कि लाइट किस हाइट पे इंसिडेंट हुई है. ओके सर, Right. थैंक यू. Under one approximation that light must be close to the optic axis. I mean this approximation must be true. So if we have two lenses, one is here and another one is here. Okay.
and if some light ray is coming from infinity, if there is no lens 1, it will go like this, but because of lens 1 it deviates and it starts going in this ray. If there is no lens 2, it will keep on going like this, but because of lens 2 it again bend, and let us say it focus here, maybe here. Okay, so nothing is here. This is a virtual path. Nothing is here also. This is virtual path. And this is the actual path of light, the solid line. So the second focal point of this whole lens system is here. Okay, but this is the focal point. How do we define focal length? इस फोकल पॉइंट को कहां से मेजर करेंगे आप? लेंस L से, लेंस L प्राइम से, या कहीं और से, और इनके सेंटर से? सर एल प्राइम कहीं और से। जो एक्सटेंड करेंगे, हाँ इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे उसको एक्सटेंड करने के बाद। Let me just redraw one line backward. सर Yes. जो F2 है सर, जो इमेज की पॉइंट है ना सर, जो F2 होगा सेकंड एल प्राइम का सर, वो दूसरा होगा ना? One minute. So F2 is the focal point. F2 is the second focal point of combination. What is the definition of focal point? Focal point is the point where light coming from infinity are converged. So light infinity से आ रही है, कहाँ converge हुई? F2 पर, right? So focal point हमें मिल गया. Yes. But focal length कैसे decide करते हैं आप? So definition of focal length is come from your convention. आप लेंस के सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं and you call it focal length. यहाँ पे क्या कन्वेंशन सही रहेगा? Okay. So this is the convention we are trying to follow, and this is quite logical also. Let me first make this diagram. What about this position? So if I remove these two lens, if I remove L and L prime, L और L prime को हटा दीजिए, put one lens here of this much focal length. इतनी focal length का एक लेंस रखिए आप. Let me call it F2 length. Okay. So F2 is actually length. Let me remove this. Can I say that this should be the equivalent position? Now you see, क्या होगा? Light is coming from infinity. Light infinity से आ रही है. It will strike the lens and then bend in such a way that it will pass through the second focal point. सब कुछ सही जा रहा है? The net outgoing light ray is precisely the same as we were getting before. जो final outgoing ray है, वो precisely उसी तरीके से पास हो रही है जैसे पहले जा रही थी, right? So this is the ray diagram. If I replace these two lenses by this alternative equivalent lens, so I can say this is the final lens, this is the equivalent lens. यहाँ पे कोई दिक्कत है इस कंसेप्ट में? नो सर. Right? So now we have both the things. Focal point भी पता है, focal length भी पता है. How much is this? कितनी है ये? Obviously it will depend on three numbers. ये separation कितना है? What is the second focal length of lens L? Let us say that is F2.
what is the second focal length of lens L prime, which is f2 prime. So you can, we just need to use trigonometry to find the complete F2 पहले length. कंसीडर कर लिया ना Sorry, सर, F2 पहले कंसीडर कर लिया, जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन है सर उसका F2 कंसीडर किया है सर, L का दूसरा होना चाहिए ना। मैं समझा नहीं आपकी बात। तो जो आपने कॉम्बिनेशन लिया है सर, उसका जो फोकल लेंथ है वो F2 है, तो जो L लेंथ है सर उसका फोकल लेंथ F2 कैसे हो जाएगा? Okay, so let me, कैपिटल है वो स्मॉल है. okay, yes, so we are running out of symbols. Let me redefine all the symbols. First of all, we are talking about second focal length only. Okay, of lens L is small f2, lens L prime is small f2 prime, combination is capital F2. Okay, this is the definition of all the symbols. Okay, now how much is the deviation produced by first lens? Delta 1. How much is the deviation produced by second lens? Delta 2. What should be the deviation produced by combined lens? यदि इन दोनों लेंस को हटा करके कंबाइंड लेंस रखते हैं तो उससे कितना डेविएशन आना चाहिए था? इन डेल्टा दोनों का 1 प्लस डेल्टा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। क्या ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के बराबर है? Yes, sir. Right? This is also delta 2. ये भी delta 2 ही. So everything is consistent here, right? और 10 delta is equal to 10 delta 1 plus 10 delta 2 for small delta. Small delta 1, small delta 2. Or the light rays are close to optic axis. What is 10? What is delta 1? Delta 1 क्या है? Let us define all these heights. This is height, let me say h1. ये height h2 है. Okay. What is delta 1? आपको पता भी है, आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं. H1 minus 2 by Delta 1 is h1 upon f2. F2. लेंस 1 को h1 हाइट पे कट किया, उसका फोकल लेंथ f2 है. दिस इज 10 डेल्टा 2 किस हाइट पे कट किया है? H2 h2 height, right? So h2 upon f2, right? What is delta? 10 delta क्या होगा? h by f. Light h1 height पे कट कर रही है and the combined focal length is capital F2. Ten delta 1 h1 upon capital F2. So what is the relation between all these numbers? सर 10 डेल्टा 2 इक्वल्स टू h2 अपॉन f2 प्राइम नहीं होगा सर यहाँ पे? Yes, sir. Yes. h1 upon f2 is h1 upon small f2 plus h2 upon f2 prime. So we have got the connection. Only problem is that we need to know what is the height. But h1 and h2 are also connected, and we must find that connection. So what is the connection in h1 and h2? So we are going to follow this triangle. Why? This triangle has both the heights in it.
and let me say this angle. Actually, this angle is delta 1. So tan delta 1 is h1 upon f2. We already know. Let me rewrite it. But it is also equal to, can we write delta 1 in terms of h2? Focus on this triangle. Let me show it to you. So what is tan delta 1? h2 upon F2 minus D. f2 minus d, right? Agree? Or what is h2 from here? h2 is f2 minus d upon f2 h2. So we just put this value of h2 here and we got the answer. So second focal length of this whole combination is, or h1 is also here. Second focal length of lens 1 plus f2 minus d divided by f2 prime h1. Agree? Right. So do we have any simplification? Second focal length of this whole combination is first lens, second lens minus 1 minute. Yes. Sir, can you please explain how you got tan delta 2 again? See this tan delta, which part is not clear to you? Tan delta 2 or tan delta 1? Tan delta 2. You mean this equation? Sir, H2 by F2 prime. Yes. This is what we discussed just now. The deviation depends only on the height at which it strikes. Okay, like if you draw one more light ray from here, will it also have the same deviation? No, sir. Now deviation will change. The image is again made at the same position. What is this new deviation? It depends on the new height. Same thing is here. How much deviation will second lens produce? That will depend on at what height does the ray incident on it. Right? So that's what we are doing. Light incident on this lens 2 is at height h2, so deviation is this much. Let us say light passed through the center. जो lens 1 से light आ रही थी, it passed through the center of second lens. Will there be any deviation at all? यदि No, lens sir. 1 से जा रही है, वो lens 2 के center से जाए. Same thing is true. Then what is delta 2 in that case? Put h2 0, zero deviation. Right? So either you can do the same trigonometry in this congested space, या तो आप पूरा का पूरा trigonometry जो पीछे किया था उसको यहाँ पे फिर से कर सकते हैं. You apply the formula 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f, or you directly use this result. Right? Any other doubt here? Sir, can you then please sum explain of that? deviation- One by one. Yes. So that H2 is equals to F2 minus D upon F2. Can you please explain that again? So focus on this triangle, this yellow triangle.
Let me show it by this red spot. So this is the complete triangle. Okay. And I can calculate tan delta 1 by two methods. This height, which is h1, divided by this base. This base is how much? f2, small f2, because if there is no lens, there is no L prime lens, light will just go straight और ये कहाँ hit करेगी? Obviously at f2 distance. So this distance is f2. Mark कर देते हैं. This distance is f2. Right? इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए आपको. So tan delta 1 is h1 upon f2. Okay. Let me recalculate tan delta 1. Now from this triangle. Okay. So what is height now? Height is h2. What is base now? अब base कितना हो जाएगा? So we need this distance. ये distance कितनी होगी? Small f2 minus d, right? Because this distance is d. ये d है. Okay, sir, got it. Yes, sir. Thank you. This is f2 minus d. Okay. So h2 upon f2 minus d. And we finally got this answer. So this is the equivalent position of lens. Although we do not know how to. डेल्टा में h1 कैसे आया? Sorry. tan डेल्टा में h1 कैसे आया? tan delta 1 is equal to h1 आपने ये कहाँ से आया? This one. नहीं सर, tan डेल्टा. So this is delta. Delta यहाँ पर है. Equivalent lens यहाँ पर है. So delta किस हाइट पे बन रहा है? ये डेविएशन किस हाइट पर हुआ? h1 हाइट पर. ये हाइट कितना है? यस सर. That is why. Okay. You need to know the angle of deviation is made at what height. जो भी आप angle of deviation देख रहे हैं, वो किस हाइट पर हो रहा है? Just calculate that height and apply this. ओके सर. Okay. So this is the focal length. We also know the equivalent position of combined lens, and it is not at center. ये ना ही center पर है, ना ही lens L1 पे है, ना ही lens L prime पर है. It is somewhere else. But is the problem solved? क्या problem solve हो गई है? This is the equivalent position when light ray is coming from infinity. If light ray does not come from infinity, will we again get the position? Will we again get the equivalent position at this point? यदि light की direction कुछ और होती, तब भी क्या हमको यहीं पे मिलता? So we must calculate. We must see one more case. उसमें light parallel नहीं होगी. Let us take another case. Let us first calculate this distance. The equivalent lens position with respect to L prime lens. L prime से ये equivalent position कितना दूर है? कैसे calculate करेंगे इस distance को? Any idea? सर वो जो सर डेल्टा D है उसकी वजह से tan डेल्टा इज इक्वल टू सर h1 माइनस h2 अपॉन x. One minute, let me see how do we calculate. So we know this whole length. So let me first remove these lines.
Let us focus on this triangle. Because this covers all the things we need. What is this angle? This angle is delta. ये angle क्या है? Delta है, right? So what is tan delta? H1 upon capital F2. जो हमको पता है पहले से. Tan delta height H1 upon capital F2. Okay. Same delta is equal to something else also. Can I say tan delta is equal to H2 upon this distance? ये distance कितना होगा? Let me call this distance beta, क्योंकि ये हमको चाहिए L prime से कितनी दूरी पर लेंस रखना होगा. So what is this remaining distance? Capital F2 minus beta, right? So H2 upon F2 minus beta. All right. We need to know beta. L prime से कितनी दूरी पर इक्विवेलेंट लेंस रखा जाएगा. और H2 we have already calculated. H2 हमने पहले कैलकुलेट किया है. F2 minus D upon F2 H1. So 1 upon F2 minus beta and F2 upon F2 minus D H1. सही किया है? Sorry, F2 minus D upon F2. Okay. So what is beta? H1 upon capital F2 is H1 F2 minus D upon F2 1 upon capital F2 minus beta. H1 cancel and we need to know beta. So let us put all the things in order. F2 capital F2 minus beta is equal to F2 minus D into F2. So how much is beta? F2 beta is F2 capital F2 minus F2 capital F2 plus dF2, right? So what is beta? Beta is F2 D divided by F2. क्या नंबर है ये? Combined focal length into distance divided by focal length of first lens. Second lens से कितना distance होगा? That depends on the focal length of first lens. Anyway, whatever is the answer, and it is on the left side. Lens second lens के left में है. Okay, at least we got the position. Now let us consider another case. I think it will crash. So again, this is the optic axis. We have two lenses. Let us assume one is here, one is here. Same distance D. This is first lens. This is second lens. The Sir, once second. more, can you show the previous slide? Say it again. क्या कह रहे हैं? Sir, can you once more slide the previous page?
आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, ब्रेक होके आ रही है, दोबारा बताइए। इसके नीचे सर, इसके नीचे वाला पेज। एनी डाउट हियर? यहाँ पे कुछ पूछना है आपको? सर इज सेइंग सेकंड वाला केस फिर समझा दीजिए जिसमें बीटा निकाला है। So all we need to know the distance of equivalent length. Can you hear me? Yes sir. Okay. Yes, sir. All we want- See, हमें सिर्फ ये पता करना है equivalent length second length से कितना दूरी पर रखा है। Okay. So there are many ways. आप किसी भी तरीके से कर लीजिए। You can use any triangle, थोड़ा trigonometry लगाना है and you can do it. So I am following this triangle. मैंने ये ट्रायंगल फॉलो किया है। ओके, क्यों फॉलो किया? इट हैज ऑल द थिंग्स व्हिच आई नीड। इसमें वो सब चीजें हैं जो मुझे चाहिए। ऑब्वियसली इट विल डिपेंड ऑन सेकंड फोकल लेंथ, पूरे कंबाइंड लेंथ का। आई नीड दिस डिस्टेंस, तो आई एज्यूम इट बीटा, मैंने इसको बीटा मान लिया। सो व्हाट इज द रिमेनिंग लेंथ? कैपिटल F2 माइनस बीटा, और आई यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। So there is nothing typical, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। You can use your own method, आप कोई अपना दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं। हमको सिर्फ बीटा पता करना है, कैसे पता कर लीजिए, राइट? एंड वी गॉट दिस आंसर। आपका आंसर फाइनली यही आएगा। नाउ माय क्वेश्चन इज दिस पोजीशन फिक्स? बिकॉज दिस इज वी ऑब्टेन्ड फॉर ए पर्टिकुलर केस। ये पोजीशन हमको एक पर्टिकुलर केस में मिली है। वो केस क्या है? When light ray is coming from infinity, लाइट रे किसी और डायरेक्शन से आ रही होती तब भी ऐसा होता क्या? क्या तब भी इक्विवेलेंट लेंस इसी जगह पे मिलता? सो लेट अस चेक, इसको चेक करते हैं। एंड वी आर गोइंग टू कंसीडर अनदर केस वेयर लाइट इज नॉट पैरेलल। अब लाइट पैरेलल नहीं है, बट दिस इज आल्सो वेरी पर्टिकुलर, वेरी सिंपल केस। क्या केस है ये? आई एम नाउ लुकिंग फॉर द फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ दिस कंबाइंड लेंस सिस्टम। इस पूरे कंबाइंड लेंस सिस्टम का फर्स्ट फोकल पॉइंट मुझे ढूंढना है। कैसे पता करेंगे? मान लीजिए दिस इज द फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ दिस होल कंबाइंड सिस्टम एंड लेट मी कॉल इट कैपिटल F1। इफ दिस इज द फर्स्ट फोकल पॉइंट, क्या होगा? एनी लाइट रे विच ओरिजिनेट फ्रॉम हियर, कोई भी लाइट रे जो इस पॉइंट से ओरिजिनेट होगी, ultimately after passing through these two lenses it will become parallel to optic axis, right? यदि ये फर्स्ट फोकल पॉइंट है इस पूरे कंबाइंड सिस्टम का, एक ये लेंस L है यहां पर, ये लेंस L प्राइम है, और इफ आई नो द फर्स्ट फोकल पॉइंट, देन यदि मैं यहाँ पे कोई टॉर्च रखता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ, देन द लाइट रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट मस्ट बिकम्स पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस। क्या पॉसिबल पाथ हो सकता है लाइट रेस का? लेट मी आल्सो मेक सम हिट एंड ट्राई। सो दिस लाइट रे, इफ देयर इज नो लेंस L, पहला लेंस नहीं होता, तो क्या होता? ये लाइट रे ऐसा ही आगे बढ़ जाता, राइट, इन दिस डायरेक्शन। बट बिकॉज ऑफ लेंस L देयर विल बी सम डेविएशन फ्रॉम दिस पाथ, कुछ डेविएशन होगा, एंड लाइट रे विल फॉलो दिस पाथ। लाइट रे कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा। ओके, सेकंड लेंस नहीं होता, फिर से डेविएशन होता, there would be no deviation and light ray will go keep on like this, light ray इस तरीके से आगे बढ़ती रहती। but because of second lens there is again a deviation, फिर से deviation होगा and light ray follow this path। okay, so this is the true path of light। it starts from first focal point, have some inclined path between these two lenses, but finally it becomes parallel to optic axis।
व्हाट इज द पॉसिबल पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस? अब बता सकते हैं इक्विवेलेंट लेंस कहाँ हो सकता है? लेट मी टेक इट बैकवर्ड, इसको पीछे ले जाते हैं। Sir, यस, yes, sir. By extrapolating the parallel line to the dotted line. so now you are saying that equivalent lens is here. अब आप कह रहे हैं कि equivalent lens यहाँ पर है, is it? Yes, sir. ये पोजीशन और पहले वाली पोजीशन सेम है क्या? If you see the ray diagram, इस ray diagram को देखिए and let me show you the previous ray diagram. This. They are just mirror image of each other. एक दूसरे की mirror image ही है. Agree? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I can directly say without any calculation, ये distance अब कितनी होनी चाहिए? ये फर्स्ट लेंस के राइट में है, अब सेकंड लेंस के लेफ्ट में ऑब्वियसली है. नाउ लेट मी कॉल इट d, द कंबाइंड फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय, पहले मैंने क्या लिखा था? फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ, एंड लेट मी ऐड माइनस, लेट मी ऐड इनवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ सेकंड लेंस. सेकंड लेंस के लेफ्ट में कितनी दूरी पर? सेकंड लेंस मींस एल प्राइम लेंस. बिना किसी कैलकुलेशन के सीधे लिख देते हैं. नाउ दिस इज f2 प्राइम. ओके, क्या ये डिस्टेंस पहले के बराबर ही है? इफ f2 एंड f2 प्राइम आर सेम देन ऑब्वियसली इक्वल होगी, बट f2 f2 प्राइम सेम नहीं है तो ये डिस्टेंस पहले के बराबर तो नहीं. लेट मी कॉल इट अल्फा. मुझे मेजर करना है ये फर्स्ट लेंस से. अल्फा इज इक्वल टू d f2 अपॉन f2 प्राइम टुवर्ड्स राइट ऑफ फर्स्ट लेंस विच इज l. ओके, दूसरा फॉर्मूला भी इसी के नीचे लिख देते हैं सो दैट वी डू नॉट हैव टू गो बैक अगेन एंड अगेन. ये क्या था? टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ सेकंड लेंस विच इज एल प्राइम. क्या ये दोनों नंबर एक ही लेंस को शो करते हैं? मींस आप लेंस फर्स्ट लेंस से अल्फा डिस्टेंस आगे बढ़े या सेकंड लेंस से बीटा डिस्टेंस पीछे हटे, क्या आपको एक ही पोजीशन मिलेगी? नो सर. नो, राइट. सो जिसको हम इक्विवेलेंट लेंस कहते हैं, क्या ये कंसेप्ट का कोई मतलब रह गया? नाउ इट डिपेंड्स ऑन विच डायरेक्शन इज योर लाइट इज गोइंग ऑन. अभी कोई तीसरा पाथ ले लेंगे लाइट का. लेट अस से यू पुट सम ऑब्जेक्ट एट सम आर्बिट्रेरी पॉइंट. आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, देन लेंस की पोजीशन कहीं और दिखाना शुरू कर देगा, राइट? सो आर दीज रियली इक्विवेलेंट लेंस? क्या हम कह सकते हैं कि वास्तव में इक्विवेलेंट लेंस इस पोजीशन पर है या इस पोजीशन पर है? No. No, right? Can we define some equivalent lens for such combinations? क्या कोई possibility है combinations के equivalent lens को define करने की? Yes, there is. But we have a slight modification in rules. कुछ modifications है. What are these modifications? Let me again go back to this single lens problem. क्या रूल बनाए थे आपने? How do you make ray diagram for any object? If a light ray is parallel to optic axis,
it will pass through second focal point. Let us say this is a second focal point, then it will pass through here. Okay. Let me use this one. If a light ray is passing through center, means a light ray like this, then it goes undeviated, right? And if a light ray is passing through first focal point, कोई लाइट रे है जो फर्स्ट फोकल पॉइंट से पास हो रही है, then after passing through this lens it becomes parallel to optic axis. ये रूल थी. So in simple words, all we need these 3 points. हमें एक लेंस सिस्टम के लिए बस 3 पॉइंट पता होना चाहिए, and these points are enough to make ray diagram. वो 3 पॉइंट्स क्या है? The center of lens, right? First focal point, second focal point. If someone give you these 3 points, then you can easily calculate position of image and whatever given to you. आपसे जो भी प्रॉब्लम पूछे आप आंसर कर सकते हैं. If someone give you information of these 3 points only. फोकल लेंथ पता करना है, कैसे पता करेंगे आप? You will subtract position of second point from first point. आप इन दोनों की पोजीशन को माइनस करेंगे, फर्स्ट फोकल लेंथ मिलेगा. ये सॉरी सेकंड फोकल लेंथ, दिस इज फर्स्ट फोकल लेंथ एंड एवरीथिंग. So how many points do you need to know? 3. What are their name? First focal point, second focal point, सर F1 और F2 का डिस्टेंस सेम नहीं होता? it is same if medium is same on both sides. But let us say this is made of glass, this is air, this is water. क्या अब भी सेम होगा? No, sir. So if you consider a very general case, some arbitrary case, then F1, F2 may be different also. If medium is same on both sides, then yes, both focal lengths are same. Okay. Second focal point and the center of lens. But this is not the complete theory. In fact, this is a simplified picture which is true only for single lens, and not only single lens. This is true only for single thin lens. If I put a thick lens here, क्या second postulate सही होगा? Let us say this is the lens. Now, is it true that the light which is passing through center will go undeviated? No, sir. Right? So these rules are true, but in a very particular case. एक बहुत ही particular case में true है, in general नहीं है. Although the pair of two lenses or two thin lenses, भले ही lens thin है, but what is the thickness of this whole system? जो लाइट में पर्टरवेल से आपने शुरू किए थे, वो तो यहाँ से शुरू हो चुके थे, and it ends here. So the whole system is not thin. भले आपने उसको thin lens की combination से बनाया है, but the region in which light is getting deviation is a quite broad region, and therefore here also you can see there is no center of system. कोई सेंटर है नहीं या उसको डिटेक्ट करना आसान नहीं है. So how many fundamental points are there in a system? Are 3? क्या 3 है या 3 से भी ज्यादा? The answer is there exist fundamental points, but they are not limited to 3. They are actually 6. क्या नाम है उनका? Jointly we call them cardinal points. Okay.
क्या होते हैं कार्डिनल पॉइंट्स? सम ऑफ देम आर सेम एज बिफोर, मींस फर्स्ट फोकल पॉइंट, second focal point, now there is no center. In general लेंस सिस्टम का कोई सेंटर नहीं होता है, सिर्फ थिन लेंस के केस में आपको एक सेंटर मिलता है, अदरवाइज we actually have 2 points and they are called nodal points. First nodal point, second nodal point. Okay, 2 पॉइंट और हैं जिनकी जरूरत पड़ती है, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट. Okay. So there are in reality 6 points exist for any combination of lenses. आप कहेंगे सिंगल लेंस भी तो एक तरह का लेंस सिस्टम ही है, then why do we have these 3 points only? It's a very simplified case. जब पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, बाकी के 4 पॉइंट कहाँ गए? सबके सब इसी के बराबर, सबके सब यहीं पहुंच जाते हैं. ओके, so center of the single thin lens is a very particular, very simplified case where you do not see all these complications. जहाँ आपको इतने सारे complications देखने को नहीं मिलते. As soon as you have a lens system or you have a thick lens, ये चारों पॉइंट एक जगह पे ना रह करके they get distributed and accordingly your ray diagram also get modified. क्या होते हैं बाकी के 4 पॉइंट्स? कैसे लोकेट करते हैं इनको? How do you make ray diagram by using these all 6 points? All these things we will discuss in next class. यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? Yes, sir. I have to ask a question. Yes. Sir, as you told that the two focal points, focal length f1 and f2 depends on the medium of both the sides of the lens. Then how does it depends on the medium of both the sides? Like it is the focal length of the lens, then it should be dependent upon the medium of material of the lens. Then why it depends on the medium of both the sides? Sir, I don't understanding this thing. Please explain. When you write this formula, what is mu? This is refractive index. Relative refractive index. Okay. So even for glass, this mu is 1.5 when we have air outside. Okay. If you dip this lens in water, then you cannot use 1.5. UG by U में होगा. Then it will be how much? 1.5. UG by UW. Yes, 1.5 divided by 1.3. If there is a water outside the lens, right? So your focal length accordingly modified, depending on what is this relative index. It depends on 2 things: the material of your lens, what is outside the lens, from where the light is coming from. Okay, That sir. is why Thank you. you can have these different numbers. Anything else? No, sir. Thank you, sir. Sir, you said a combination of lens does not have any physical significance, but sir इससे solve तो हो जाता है. You are talking about equivalent lens, huh? Yes, sir. Yes, sir. So first let me complete this cardinal point concept, then you will get the answer. So the answer is something like this: you do not have one single position where you can place equivalent lens. ऐसी कोई पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करती जहां आप इक्विवेलेंट लेंस को रख सकते हैं. बट लाइक ए सिंगल लेंस एक्चुअली ए कंसेप्ट ऑफ 3 पॉइंट. जब आप ये सिंगल लेंस की बात करते हैं, यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस 3 पॉइंट्स, राइट? इन द सेम मैनर ए लेंस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू दिस 6 पॉइंट्स. सो आप इन 6 पॉइंट्स को जैसे लोकेट कर लेंगे,
now you can forget all the lenses. अब भूल जाए कि लेंस कहाँ रखे थे. Okay, so in that sense equivalence exists, but आप एक हार्डकोर लेंस एक जगह पर रख कर काम नहीं चला सकते, right? Okay, sir. Let me complete this, then things will be clear to you. Thank you, sir.